और इस दफ़ा we have invited a corporate guru, technically a banking guru with us, Ahmed Sajjad Kiani, to shed light on the employability skills, especially for banking and other employment as well. So Ahmed sir, thank you so much for joining us today and sparing your time. Walaikum Assalam. Dr. Shahab, it's a pleasure to be with you, and it is really an honor to be part of your live stream, and it is really very exciting for me. Thank you very Thank you much so for much. inviting me. See, Kiani sir, just to, since we worked together as well, approximately, if I'm not wrong, 13, 14 years back in banking, Mizan Bank. So, मुझे बताइएगा कि तो introduce, would you like to introduce yourself to the audience? अपना core जो experience है, that attracts the audience with respect to कि basically एक success के लिए क्या ज़रूरत है? आपने banking में एक छोटे grade पे join किया होगा, then you reach to vice president. So, what were the skill set you required? So, just let us go through your experience and tenure and all journey throughout your banking career. Dr. Shahab, my journey of professional life is very interesting, and I must say that it has come to me the way it was coming, and I was just passing through it. I did my MBA from a local university over here in Pindi, Islamabad, and I did it in marketing. And that time I was looking forward for something to express myself. And since at that time when it was around 96, 97, there was a little time when there was a drama going on the PTV, which was the Sunehre Din, and everybody wanted to be into the armed forces, right? And before that, everyone was part of being doctor, engineer, and extra. But that particular time, the commerce industry was growing very rapidly, and the educational side was also encouraging the people to come forward for masters in commerce, M.Com, B.Com, and so on and so forth. So that time I realized that I have to be part of something where I can prove myself to be something. And I joined one of the organizations in the local Rawalpindi that is known as Army Welfare Trust. And I joined there as a data entry officer. Not the professional banking, but it was part of a semi-banking side of the corporate side. It was a very interesting journey. I joined there where I had to specifically to serve a specific group of people. And honestly speaking, it's not self-praise, but the time I joined there, I realized that there's so much of room for me to play, because I could see those things which were lacking in that organization. I had an idea of being an outsider and converting myself into a customer. I said, this is the right place to work for. So I did there, and I worked very hard, day and night, without going on leaves and doing false excuses, which mostly people do in professional lives. But I was very religiously doing my job. And then from there, I joined Askari Commercial Bank, one of the leading banks in Pakistan. Again, it was a brand which was being dream of so many other people who started their banking career of my time and tenure. Then again, from there, I was picked up. I would like to say I was not. I joined that, but I was picked up by one of the corporate tycoon of that time, who was introducing Islamic banking in Rawalpindi for that particular brand, that was Al Falah. And that he is presently the president of a bank also, and his counterpart was Fahad Sardar Khan. They saw me working in my branch, and they said, why don't you join us in Islamic banking? We are going to introduce Islamic banking, and you should be part of our team. So I joined Bank Al Falah, and from there I moved to another big pedestal. I would say that Allah has been very kind to me. I went to Mizan Bank, which was the leading bank in Islamic banking, and Alhamdulillah, it was again a very good successful story. And presently, I am working for a bank, Bank Islami, which is no doubt about it, a very moderate, very humble, but very religiously working on making the society free from riba. And Alhamdulillah, I've been tutored by so many good gurus of the banking, like Kalimur Rahman Saab from Askari Bank, Shamim Saab, Saiful Islam Saab, Tariq Ali Khan, again one of my mentors in the Mizan Bank, Salim Khan Saab. And definitely your company was, and again, a big pedestal for me to learn the corporate training side also, which I have always been a part of. Okay, so
Kadhib, thank you so much for such a detailed introduction. Of course, just I just wanted this detailed introduction for two main reasons. One was so that of course the young graduates see that के overnight कोई भी vice president नहीं बनता या top पे नहीं जाता. It takes of course journey. It takes of course your blood, your sweat, so that of course you can reach to a stage. अच्छा, being precisely go to the point. आजकल young graduates के अंदर क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा सा और simplify करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल उनकी पर्सनल ट्रेट्स क्या होनी चाहिए, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ. टेक्निकल ट्रेट्स में तो बात हो गई है कि जी आपको आईटी आनी चाहिए, आपको फलां सॉफ्टवेयर आना चाहिए, बैंकिंग में ये आना चाहिए. सो बैंकिंग ट्रेनिंग सारी टेक्निकल ट्रेनिंग है. यू कैन लर्न नेफ्ट, यू कैन लर्न रेमिटेंस क्लियरेंस, फॉरेन रेमिटेंस, कैश, वट. लेकिन आप मुझे बताइएगा कि व्हाट आर द ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स पीपल नीड दीज डेज, यंग ग्रेजुएट्स टू बी एम्प्लॉयड. क्योंकि खाली मेरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू है, यू कैन डिसएग्री और एग्री टू इट, और यू कैन इंडोर्स इट एज वेल, कि क्या डू वी नीड स्किल सेट विद द डिग्री एंड व्हाट काइंड ऑफ एन इंपॉर्टेंस डज दिस स्किल सेट हैव ऑन डिग्री. और आपके पास जो फ्रेश ग्रेजुएट आते थे बच्चे, उनकी कोई बातें, उनकी ऐसी स्टोरी दैट इज यू कैन शेयर विद अस एज वेल. डॉक्टर साहब, जो सबसे अच्छी चीज आपने बताई वो ये है कि एक माइंडसेट का होना एक इंडिविजुअल के अंदर बड़ा जरूरी होता है. हमारी जो आज की प्रेजेंट यूथ है, दे आर वेरी एनर्जेटिक, दे आर वेरी मोटिवेटेड, बट दे आर वेरी ओवर एम्बिशियस, and they feel like Google can always help them with a one click. Their professional life will always be like that also. For that, they say that we just have to enter to an organization, and then over the night we'll become the CEOs of an organization. And for that, they are lacking certain traits which they should follow or they should learn. First of all, I would like to say, Ali, um, a person should know who is he or who's she. आप 99.9% लोगों से रेंडमली क्वेश्चन पूछें who's ABC, तो they'll be staying asking, looking at you कि ये क्वेश्चन है या ये तंज कर रहे हैं. Because if you ask somebody कि यार तुम हो कौन, like for example you go for a brand of a TV, you'll see कि यार इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी है, इसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, इसका बॉडी शेप अच्छी है. Whereas अगर आप एक इंडिविजुअल से पूछें तो वो वाहिद चीज होगी जिसके उसको बारे में पता ही कुछ नहीं होगा. तो उस चीज को सबसे पहले आई वुड लाइक टू से कि जब भी कोई यंग ग्रेजुएट्स पढ़ रहे होते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं या हो गए होते हैं, तो उनको ये चीज बहुत पहले मालूम हो जानी चाहिए कि वेयर दे हैव टू गो टू. आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, लाइक फॉर यू बिकम अ पायलट, यू वांट टू बी अ पायलट और यू वांट टू बी अ बैंकर, तो आपको ये फाइंड आउट करना है, एम आई हैविंग दोस ट्रेट्स व्हिच मेक मी अ गुड पायलट और अ बैंकर. आपको जैसे मैं डॉक्टर साहब बताता हूँ, आपसे मैंने एक ट्रेनिंग में चीज सीखी भी थी, बहुत जबरदस्त आपका वो इंटरेक्शन सेशन था, जिसमें आपने बताया था कि भाई यू कैन नॉट सेंड अ डक टू एन ईगल स्कूल टू लर्न फ्लाइंग. उसी तरह अगर एक यंग ग्रेजुएट पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके जीपीएस बहुत अच्छे आ रहे हैं, एंड ही वांट्स टू बिकम अ बैंकर, बट उसकी ह्यूमन साइड जो है दैट इज वीक, ही इज इंट्रोवर्ट, he is not good in interacting with people, so once he'll be joining the organization it will be a disaster for him and as well as for the organizations. So for them they should first learn who they are, और ये सबसे बड़ा human aspect है to learn. knowing yourself, so okay, so आपने कोर बात कर ली, यूएसपी, वी कॉल नॉर्मली हम इसको ह्यूमन साइकोलॉजी बोलते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. सो नॉर्मली प्रोडक्ट की यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होती है, जैसे मिजान बैंक की इस्लामिक बैंकिंग है, या मे बी आप एक गाड़ी की बात कर लें, मर्क, बेंज, बीएमवे, या किसी की बात करना चाह रहे हैं, तो हर बंदे की हर एक प्रोडक्ट की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन. सो यू आर टॉकिंग अबाउट कि एवरी पर्सन दैट the person should have a unique selling proposition and the person should know whether कि उसको किसी कैरियर में जाना है या नहीं जाना. सो राइट, ओके. अच्छा, उसके अलावा, उसको पता होने के अलावा, व्हाट आर द की स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स a graduate should have to enter in a corporate world if the person is looking for a job? Yeah. For I'll talk specifically about the banking side. If the young graduate wants to come to the banking side, the soft skill is that he should be a person aware of so many things that are going around him. He might be very good in learning about the economical affairs of the society or the country, but he might not be knowing that who's the world champion of a footballer, or who's the world champion of cricket, or he might not be knowing that what Russia and Ukraine is having a fight over.
right? This is one of the points which he should or she should know, because मेरे पास कई बच्चे interviews के लिए आते हैं. On the lighter note आपको मैं बताता हूँ, one of the young person came to me and she studied the Pakistan studies and did masters in that. So I asked her, I don't take interviews on a very stereotype like asking about the particular subjects only. I said, बेटा आप मुझे बताइए कि जो आपका डैम बना हुआ है जेलम के ऊपर, ये किस दरिया पे बना हुआ है? एंड आई एम गिविंग हर द आंसर कि जेलम पे जो डैम बना हुआ है वो किस दरिया. तो शी सेड सिंध. And I was surprised, like ठीक है, she might be, because I wanted her to be on the side of the customer services. तो वहां पे आपको एक ठीक ऐसा इंटरेक्शन करने के लिए आपका सिस्टम डाउन हो गया. नाउ यू हैव टू टॉक विद पीपल जिसमें आप उनको अकोमोडेट कर सकें. सॉफ्ट स्किल आपकी होगी तो आपको पता चलेगा ये फुटबॉलर अच्छा है, ये क्रिकेटर अच्छा है, ये सियासत पे बात करना चाहता है, नहीं करना चाहता. ओके. So these are the skills one should know. And secondly, one very important thing is that you should have an extra activity coming to you as a God gifted thing, और उसको आपको एड्रेस करके पॉलिश करके रिफाइन करना चाहिए. अगर आपके पास वो चीज ठीक होती है. है then you have a good communication skills. अच्छा ठीक है. तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर लेते हैं. सो बैंकिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन एंड हैंडलिंग कस्टमर्स, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टफ कस्टमर, राइट, यू नो अ रियल एग्जांपल यू फेस इन बैंकिंग. अब फॉर एग्जांपल अब उस टफ कस्टमर को फेस करने के लिए एक फ्रेश ग्रेजुएट जो कि काउंटर पे बिठा दिया गया है एंड कस्टमर सर्विस ऑफिसर रिसेंटली हुआ है, सो वो उसकी यू नो व्हाट काइंड ऑफ एन स्किल सेट डज ही नीड टू हैव? फॉर एग्जांपल कि अगर कस्टमर सर्विस से वो जाना चाह रहा है, तो जस्ट आप सबको बताना चाह रहा हूँ कि सर्विस सेक्टर के अंदर इन कस्टमर सर्विस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, क्या कोई अच्छी एग्जांपल कुछ बता सकते हैं मुझे आप? जी देखें, वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब. आई मस्ट से दैट्स व्हाई आई ऑलवेज एडमायर टॉकिंग टू यू एंड टॉकिंग टू अ वेरी लिटरेट पर्सन लाइक यू, बिकॉज यू पीपल हिट द राइट इशू, राइट? ये one of the aspects to look at it is the part of the organization and one is the part of the individual, right? For an individual who's sitting on a customer services desk should be very clear about it that the one who's working inside the organization or in his office or in the branch, he or she is having an issue, irrespective of that he's coming with a smiling face or is he coming with a very upset personality. Now that person has to have the ability to come and forward and talk to that gentleman with all the confidence that one has, right? For example, assalamu alaikum sir, how are you today? That will be the first thing that a person would come to know, that that person is literate, he's well aware of his job, and he is the one who's going to take care of my issue. If that is not there, then the person who's coming in a furious mood or he's a tough customer and the person greeting him is again into a jeopardy, will make a good combination for making a disaster in the branch. So you have to have the Okay. confidence in yourself to take care of the situation, and that situation prevails around us every day. And the live example is your home. Like your father is your branch manager, your mother is your manager of operations, and your siblings are your kid brothers and sisters are your customers. So the way you handle them, the same way it has to go to the people coming other than the family. वेरी गुड एग्जाम्पल. सो ओके, सो मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ कैंडिडेट होके. किन बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल एक बैच है, लेट्स से बैच ऑफ 30, राइट? सो उसमें से 10 बच्चों को नौकरी मिल जाती है और 20 बच्चों को नहीं मिलती. और इफ आई आस्क यू नो सेशंस, आई नॉर्मली आस्क पीपल कि क्यों मिलती है, तो कहते हैं रेफरेंस से मिलती है. तो मैंने उनको बड़ा फ्रैंक, इट्स अ रॉन्ग अजम्पशन एंड अ टोनी इन योर माइंड. सो आपके माइंड में मुझे बताएं कि जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही होती, फॉर एग्जाम्पल हम लोग आपके सामने बैचेस लेते थे बैंक्स में, तो अगर हम बैच के अंदर से कोई बच्चा नहीं कंटिन्यू कर पाता था या नहीं आगे जा पाता था, तो व्हाट इज द मेन रीजन? वो 30 में से 10 बच्चों को नौकरी क्यों मिलती है और 20 को क्यों नहीं मिलती? उसमें डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात जो आपने पहले ही बता दी कि जो एक टैबू है या एक टोनी जहन में मौजूद होता है जिसपे लोग समझते हैं कि एवरीथिंग इज गेटिंग टू देम थ्रू रेफरेंस, ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस होता है एक आदमी का किसी जगह पे सिलेक्ट ना होने की वजह से. और उसकी वजह ये होती है कि जब वो अपने आप को अंडर प्ले कर रहा होता है या अपने आप को उस तरह कन्विंसिंगली उस जगह पे नहीं लेके जा रहा होता है जहाँ पे वो किसी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है और वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई बेनिफिशियल साबित हो सकता है, तो वो आधे से ज़्यादा बैटल उधर ही हार जाता है.
वो जो 20 बच्चे होते हैं, वो बच्चे या तो गलत ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके माइंड में सिर्फ नौकरी लेना होता है। उनके माइंड में उनकी कैरियर ग्रोथ, उनके माइंड में उनकी एजुकेशन, उनके माइंड में उनकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल आप कह लें मल्टीप्लाइड बाय जीरो होते हैं। फॉर दैट रीजन दे आर अनएबल टू come to the level or the expectation of the person who's going to take the, for example मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर एक बच्ची जिसको या बच्चा जिससे मास्टर्स इन पाकिस्तान स्टडीज करके आ रहा है और उसको मंगला डैम का नहीं पता कि वो किस दरिया पे है, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी कैपेबिलिटी टुवर्ड्स द जॉब क्या होगी या उसका माइंडसेट या माइंड स्किल क्या है। वो जो 10 बच्चे हैं, दे आर प्रॉपर्ली इक्विप्ड विद ऑल द नेसेसरी यू कैन से द थिंग्स अवेलेबल टू देम फॉर गेटिंग अ गुड जॉब और टू बी सिलेक्टेड। ठीक ठीक है। अच्छा, मुझे साथ साथ क्वेश्चंस भी क्योंकि आ रहे हैं, सो एक क्वेश्चन ये आया कि अगर आप ये बता दें कि बैंकिंग में कौन से पैथवेज हैं जिसके थ्रू आप बैंकिंग में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि मैं सबको कहता था कि बैंक में आप इस तरह नहीं कर सकते कि अस्सलाम वालेकुम ब्रांच में गए कि मुझे नौकरी दे दें वो दे दें, क्योंकि यू नीड टू प्ले विद कैश, जी यू नीड टू प्ले विद नंबर्स। और 1000 2000 हो या लाख 2 लाख हो, बैंक के लिए इक्वलेंट है 1 रुपया भी और 1 करोड़ रुपया भी, बिल्कुल। राइट? सो यू कैन नॉट क्लोज कैश, यू कैन नॉट क्लोज काउंटर अंटिल इट इज बैलेंस्ड। तो अब मसला ये होता है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट है, बैंकिंग एंट्री के उसके कौन से तरीके हैं? आप ऑपरेशंस का भी बता दें और सेल्स का भी बता दें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिंस इट्स हैज बिकम अ ग्लोबल वर्ल्ड, आप कह लेते हैं कि वी आर ऑल रिलेटेड टू द आईटी थिंग्स नाउ। Every international or national banks working in Pakistan or abroad, they have got the links available, जिसके ऊपर लोग सबसे पहले अपनी जॉब हंटिंग के लिए जब जाते हैं या बैठते हैं, they should search the banks that who is hiring and who's looking for people to come and do their assignments. उसमें स्पेसिफिकली बता दिया जाता है कि either they would like to have fresh graduates, they would like to have batch trainees, or they would like to have professionals already working somewhere. Operations, definitely it comes with time. Operation is one thing which you have to learn after going through the operation manual of an organization, right? So once you go through that, then you become a good operation officer. Like for sales, we all are selling ourselves, right, on daily basis. आप दुकान पे जाके अगर किसी से उधार 7 अप भी पी के आते हैं, तो डेफिनेटली आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आपने 7 अप उधार पे पी है। अदरवाइज अगर आप ये कहते हैं कि इसके लिए कोई फॉर्मूला है या इसके लिए कोई आपको किसी डिग्री की जरूरत है, तो वो जरूरत नहीं है। सेल्स इज वन ऑप्शन। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, यू कम अप विद योर CV that should be so comprehensive by saying कि जी this is what I'm capable of doing and this is how I can do things better. So this is one way of going for the sales thing. और आई थिंक गोइंग थ्रू दी बैंक्स साइट्स, जो वेबसाइट्स होती हैं, दैट इज द मोस्ट appropriate way of getting a good job in a good bank. ठीक है। सो एडिंग इनटू दैट, जस्ट टू एडिंग ऑन टू द क्वेश्चंस, क्योंकि ऑफ कोर्स आई हैव हाइड पीपल। सो दो पाथवेज होते हैं बेसिकली, वन इज टुवर्ड्स सेल्स, जो डायरेक्ट भी आ सकते हैं, मतलब जैसे बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर आपके डायरेक्ट भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऑपरेशंस में जाना है, सो यू नीड टू गो थ्रू अ सर्टेन वेबसाइट एंड बैचेस एंड एवरीथिंग। उसके अलावा ऑपरेशंस में आप नहीं आ सकते। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कैनी साहब, एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है, और यू नो यू कैन बेटर आंसर, आपने अराउंड 20-22 साल 25 साल बैंकिंग में गुजार दिए, आर बैंक्स गुड पे मास्टर्स? हाँ या नहीं? हाँ तो क्यों, नो तो क्यों? They are very good paymasters. Banking industry is one of the businesses which is prevailing very good and very effectively into the present uncertain situation and economical situations. Or they mean business, because whenever you are being paid very nicely or very properly according to your expectations, the work expectation is also very much high. But sometimes these things do go the other way around also, that the expectation of the workload is very high and the salaries are very less. So these are two debatable things, but still your question is concerned, banks are good paymasters. ओके, गुड, थैंक्स फॉर द एंडोर्समेंट। ओके, अगला सवाल मेरा आपसे जो है वो ये है कि एक बच्चा, फॉर एग्जांपल आपके आपके पास बहुत से ऑफ कोर्स यंग ग्रेजुएट्स ने भी काम किया होगा ब्रांच में, आफ्टर 1 ईयर और 2 आपने, मैंने देखा है कि जो बैंक्स में यंग ग्रेजुएट्स आते हैं, बैंक के अलावा कहीं भी है, मैंने आई हैव सीन दैट, ऑफ कोर्स आई हैव हायर्ड फ्रेश ग्रेजुएट्स, वर्क फॉर फार्मास्यूटिकल, एकेडमिक्स एंड डिफरेंट सेक्टर्स में जो मैंने काम किया है। जब यंग बच्चा आता है ना, वो बड़ा एंथुसियास्टिक होता है 5-6 महीने तक, उसके बाद बिल्कुल फ्लैट लाइन हो जाती है ईसीजी की, इसकी ना मतलब है ना डेड।
सो क्या रीजन होते हैं कि ब्रांच में आपके पास एक इतना अच्छा मैंने एंथुसियास्टिक बच्चा ट्रेन करके भेजा और क्यानी साहब ब्रांच मैनेजर ने उसको फौत कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू द एंथुसियाज्म दैट पर्सन हैज। तो क्या रीजन है? लीडरशिप का ताल्लुक होता है कि आई डोंट नो आजकल के बच्चों में खराबी चल रही है? जी, आपका आखिरी पार्ट आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट इट, लेकिन बच्चों में खराबी से ज़्यादा मैंने आपको बताया कि आज का बच्चा इज़ ओवर एम्बिशियस, ठीक है। और वो समझता है। देखें, मैं आपको अली बताता हूँ, कैन यू ईट द सेम ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग? नो। If I keep on feeding you with same bread and egg, that one day you will start saying that I don't want to have it, ठीक है। right? But if you change the utensils in which you are having it, sometimes you are having it with hands, one day you are having it with knife and fork, and one day you are making it little lively by putting a flower in front of the breakfast, and you are charged up within yourself, that how you can keep on having that breakfast every day. The banking is a very stereo sort of a business activity in which everyone has to come to the bank for either giving the money or taking the money, right? Okay. And in that you cannot add anything additional to it. So in order to make it more happening or more interesting, the person has to keep on innovating the things around him. And वो जो बच्चे का बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, because he is having the same omelette every day, and he says that it's enough, I don't want to have this anymore, I want to now have something different, and cereal or something attractive जो दूसरी साइड पे pasture हमेशा ग्रीन नजर आ रहा होता है, तो वो उसकी वजह से बोर और मोनोटोनस का शिकार हो जाता है। इसकी वजह से ये होता है कि वो बच्चे के अंदर या ब्रांच मैनेजर के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती, उस बच्चे के अंदर सेल्फ इनिशिएटिव का डेली बेसिस पे ना होने की वजह से वो सेल्स, because you see every time banking is one organization and one profession, वो आपको डेली कुछ ना कुछ सिखाता है। The same issue is come to you in a different way, ठीक है। so how do you enjoy it, that's important. Okay, so अच्छा मेरे stats हैं, I've got some stats with me as well, right? So in Pakistan, banking is the highest as an employer, highest employable जो हमारी आवाम है वो बैंकिंग में है, all across Pakistan की बात कर रहा हूँ। We got around 34 plus with मतलब I guess maybe 10,000 plus branches all across, maybe 5,000 plus उसमें इतने लोग employed हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ऑफ कोर्स बेसिकली जस्ट इफ यू गेट आउट ऑफ बैंकिंग, राइट, एक मिनट के लिए मुझे ये बताएं कि आई हैव सीन पीपल हैविंग चर्न। ओके, चर्न, लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर द ऑडियंस। चर्न इज शिफ्टिंग फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। एज पर द रिसर्च एंड द फैक्ट्स, पीपल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो बैंकिंग के अंदर है, बच्चे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो एक साल बाद दे स्विच, फॉर एवरी ईच ईयर दे स्विच in different banks. Okay, you yourself have switched banks, so it was good for you because it was learning, but of course you might have switched after 3 years, 4 years, 5 years, 10 years, right? So आजकल ये churn ज़्यादा क्यों है, और does it cost the bank or the branch or it doesn't? Fresh graduates. Since Dr. the banking industry has become target oriented, right? Okay. And the target oriented organizations always give you a platform to grow. Either it makes you grow very rapidly or it makes you go down the drain very quickly also. So if the person who is looking up or doing his started his career in the very early stage, and he comes up with the expectations of the management by all means give that individual a chance to grow and to become something in very quickly. Being a banker, you should know that under your sleeves, what do you have? If you have got some available sources with you which can make you grow into the banking industry very rapidly, then there are chances that you might be getting more than what the pay you were getting in your previous organization. So that is one of the reasons that the people who are switching and the organizations who are making them switch is just because of this thing, that the money is the same. Like one piece of cake available to you is the same piece which is being to be eaten by so many people, right? You make it go from one hand to another hand, or to one person to another person, that hardly matters. Who gets or who grabs the maximum share of that cake piece is the one who's successful or doing the best. So the young graduates and the young bankers, they are switching because they know that what they have, they're gonna cash it, and they would like to go on to the next level very quickly. Okay, so in the last couple of questions, right, so while you conduct trainings in universities, you are invited as a guest speaker at universities, and of course you go to different business schools as well, to talk to students. So what did you find that lack in universities education these days?
यूनिवर्सिटीज़ क्या नहीं सिखाती हैं। अक्सर वो तालीम और तरबियत पे बात की जाती है कि ऑफकोर्स तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट है, खाली तालीम नहीं है। सो आई एम बीइंग फोकस टू द टॉपिक ओनली कि एक यूनिवर्सिटी को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए यंग ग्रेजुएट में, जो आपको मिसिंग लगता है जब वो आता है उसके अंदर वो नहीं होता। सो व्हाट डू यू रियली मिस इन दीज ग्रेजुएट्स एंड वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू द यूनिवर्सिटीज? जी, इसको ओवरऑल डॉक्टर साहब आप इस तरह देख लीजिए कि हमारी जो बच्चा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाता है वो टोटली ब्लैंक होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूट उसको पढ़ाना चाह रहा होता है वो उससे भी ज़्यादा ब्लैंक होता है, बिकॉज उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स को पूरा करना होता है। लड़के ने सिर्फ इसलिए तालीम हासिल करनी होती है कि बिकॉज सम डे सम हाउ ही इज गोइंग टू गेट अ जॉब विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इज ही गुड एट, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन ये देखता है कि हाउ कैन वी मेक हिम अ गुड यूजफुल कमोडिटी फॉर द सोसाइटी, राइट। मैं अक्सर ट्रेनिंग में एक चीज़ का सवाल पूछता होता हूँ डॉक्टर साहब, आपने शायद कभी अटेंड किया हो, कि 14/2 क्या होता है। तो 99.9% लोग उसका जवाब मुझे 7 में दे के फारग हो जाते हैं, देन दे लुक एट मी कि ये कौन सा सवाल पूछा है। क्वेश्चन ये नहीं था कि 14/2 का जवाब क्या होता है, क्वेश्चन ये था 14/2 होता क्या है, राइट। उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए दोनों पार्टीज का एक पेज के ऊपर होना, उन चीजों को एड्रेस करना। आपने देखा होगा इन द वेस्टर्न वर्ल्ड पीपल हैव द यू विश to go to a specific college or go to a specific university because they know what the traits they want to have that can only be provided to them through that institution. Whereas in our society, in our system, things are not like this. बंदा पढ़ इसलिए रहा है कि उसे कोई जाहिल ना कह सके, और ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसलिए बना रहे हैं बिकॉज दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट। जो कॉम्बो एक दोनों का जॉइंट वेंचर होना चाहिए, दैट इज नॉट प्रिवेलिंग इन द सिस्टम। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस दैट तालीम और तरबियत सिर्फ तकरीरों की हद तक रह गया है। हम सिर्फ स्लाइड फोकस पढ़ाई कर रहे होते हैं, लाइक यू कम टू द क्लास, यू गिव देम द लेक्चर, यू मेक देम गो थ्रू द स्लाइड, दैट इज इट। इफ यू से कि यार तुमने आज लर्न क्या किया है, आई श्योर डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस मुझसे ज्यादा है, यू विल फाइंड आउट दैट मोस्टली पीपल वुड से जी सर। तो एक बड़ा अजीब सा सवाल लगता है कि जी सर का मतलब क्या था। जी, I've taught in an institution वहाँ मुझे कहते सर right? So वो anyway अच्छा, मैं just to conclude your whatever you've said, so thank you so much Kiani sir for your all time. I know it's very precious while you are might be going to the closing for the branch at around 5:30, but just to conclude what Kiani sir has said, so we'll have a series of sessions. So I've just thought to have a session with the banker, so that of course, since the bank employer right now in Pakistan for getting people employed, अगर आप काना काचा भाई मेरू लाला मूसा कोई इवन छोटा शहर भी है उसके अंदर भी बैंक होता है, and you can get an opportunity in banking as well. So first thing is that you need to have a USP, unique selling proposition. Of course you should know how to sell yourself. मैंने किसी से पूछा कि क्या आपने कभी सेल्स किया है, तो उसने जवाब दिया नहीं। तो मैंने कहा कि आप क्या अपने आप को सेम तरह सेल करते हैं अपने वालिद और अपनी दोस्त को? सवाल ही पता नहीं होता। So you know the techniques, the way you sell yourself differently to a friend and a father. So it means you know that कि कौन सी बात अम्मी से करनी है, कौन सी बात बेगम से करनी है. So you sell yourself differently, right? तो इसी तरह we all are sales people, even कि हमें अपने आप को organization पे once you are on a table, तो you sell yourself, एक ब्रोशर देते हैं आप अपना, जिसको हम CV कहते हैं, resume कहते हैं, कि पढ़ लें, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझसे बात कर लें। जब आप मुझसे बात की जाती है तो आप ये कन्विंस करते हैं कि आप मेरे 8 घंटे खरीद लें अपने काम करवाने के लिए, मैं आपके 8 घंटे बहुत अच्छे से आपको सर्विस दूंगा। तो यू सेल योरसेल्फ। सो फॉर बैंकिंग सेल्स इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, यू नीड टू हैव सेल्फ बिलीफ, यू नीड टू हैव समथिंग इन यू कि जो दूसरों से आपको डिफरेंशिएट करे। यू ऑलवेज से दैट यू नीड टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ लाइक हॉर्सेस एंड स्टैलियंस, यू नीड टू बी अ स्टैलियन इन द रन। और एक लास्ट बात, नौकरियां नहीं है। आप मुझसे पूछें, 15 साल मुझे एचआर में हो गए हैं, बेतहाशा बंदा हायर किया होगा, बेतहाशा नौकरी मार्केट में मौजूद है। इट्स ऑल अबाउट वी डू नॉट फाइंड द राइट पीपल। मैं इतना खपता हूँ अपनी टीम के साथ, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कि हमें वो स्किल सेट का बंदा ही नहीं मिलता। वो जीपीए पे बात कर रहा होता है कि जी मेरा 4 जीपीए है, मेरा 3.9 जीपीए है, फाइन, इट इज वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस नो दैट हाउ यू कैन हैंडल अवर वर्क इन अवर ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन स्ट्रीमलाइन थिंग्स एंड यू कैन बी इफेक्टिव फॉर अस। सो हमें एक यूजफुल बंदा हायर करना होता है। We do not need to hire a furniture that is put aside and that person does not work for the organization. So thank you so much Kiani Saab, and we look forward for further sessions as well, inshallah.
and we would look forward for inviting further sessions inshallah. तो आपके साथ हम दोबारा भी एक सेशन करेंगे, further plan, and anything would like to say in the end, so before we conclude. Dr. Shahab, it was pleasure being with you, or I have really enjoyed your company. I have always learned things from you, and it is so good to be part of your system and your organization. Hopefully to see you again, inshallah. And thank you very much for giving me an opportunity and a pedestal to come and express myself. It's been really a great honor. Pleasure is all mine. So very kind of you. Thank you so much, sir. Stay in touch.